A very good evening, guys. I am back with another story for class 10, and we are doing From the Diary of Annie Frank. A story that was written when she was only 13 years old and struggling with depression. A story that has been interpreted in so many different languages. A story of a girl who made diary, that means the kitty, her best friend. So इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड हैं, राइट? सो आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी को, वैसे मैंने स्टोरी के 2 पार्ट्स बनाए हैं, बट आई फेल्ट आफ्टर मेकिंग द सेकंड पार्ट दैट वी नीड अ पार्ट 3 एज वेल फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड स्टफ. So yes, this is a story from the diary of Annie Frank with lots and lots of vocabulary, lots of words to understand and comprehend the ability of a 13-year-old to write a story like this. What prompted her to write a diary? What was the reason she was writing a diary? What difference did it make in her life? Everything. So let's start with a beautiful story, guys. लेकिन उससे पहले मुझे आप सब लोगों से क्या चाहिए? Likes and shares. Guys, अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपनी ही फैमिली को लाइक एंड शेयर नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भैया अभी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप तो कहानी में खो जाएंगे, राइट? लेट्स स्टार्ट आ छोटा सा ब्रीफ सा सेशन विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बाय एनी फ्रैंक. लेट अस स्टार्ट विद इट. सो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप बता देती हूँ. दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड. Annie Frank is a Jewish girl. For reference, she is Jewish. Okay? For reference, she is Jewish who is hiding during World War II. वो अपनी जान बचाने के लिए बच रही है in order to avoid the Nazis, ताकि वो Nazis के capture में ना आ सके. She shares her experience and उसने क्या किया, उसने बाद में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. एंड द स्टोरी ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ डिप्रेशन, दिस इज व्हेन शी फेल्ट अटरली डिप्रेस्ड. ये तब उसके जीवन की स्टोरी है. ऑल्सो शी हाइड्स इन द सीक्रेट एनेक्स ऑफ द प्रिंसेग्रेट 263 in Amsterdam with 7 other people, and this is where she is with 7 different people, right? So here is the story from the diary. She starts with, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत ही strange experience है. Of course, she is a child then. Not only because I have never written anything before, वो इसलिए नहीं कि मैंने आज से पहले कुछ लिखा नहीं, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो कहती है कि डायरी मैंने कभी लिखी नहीं, इसलिए नहीं कि मैंने कभी लिखी नहीं, इसलिए भी मेरे लिए डायरी लिखना बहुत अजीब है कि मुझे भी पता है कि बाद में ना मैं और ना पूरी दुनिया में कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा. They will not be interested in the musings. Musings का मतलब होता है thoughts, contemplation on the reflections of a 13-year-old. वो क्या कर रही थी, वो अपने जीवन का रिफ्लेक्शन ही तो डाल रही थी. तो उसने सोचा कि कभी फ्यूचर में थोड़ी ना ये डायरी कोई पढ़ेगा. शी नेवर न्यू, सी यू नेवर नो, कि कोई उसकी फाइंडिंग्स के बारे में, उसकी सोच के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में, उसकी थिंकिंग के बारे में कभी कुछ सोचेगा. ओह वेल, इट डजंट मैटर. फिर वो खुद ही कहती भी है, वैसे ये सारी चीजें मुझे मैटर भी नहीं करती. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे अभी लिखने का मन कर रहा है. And I have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. और इस समय मैं एक ऐसे कंडीशन में हूं जब मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मेरे दिल पे जो बोझ है, मेरे चेस्ट में जो बातें हैं, वो मैं लोगों तक रख सकूं. या लोगों तक तो क्या, उस समय तो वो अपनी डायरी में अपने लिए लिख रही थी, क्योंकि उसको एक फ्रेंड, उसको एक कंपेनियन चाहिए था जिसके साथ वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी डिटेल शेयर कर सके. और वहां पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था. Paper has more patience than people. This actually proved to be so right for her.
उन्होंने एक बार सोचा था और इसे लिखा भी है अपनी डायरी में कि पेपर के पास पेशेंस ज्यादा है लोगों से, यानी लोग सुनते नहीं, वो बहुत जल्दी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, बट डायरी में पेपर्स जो पेजेस हैं दे नेवर डू दैट, दे हैव मोर पेशेंस, वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं आप पर. I thought of this saying on one of these days when I was feeling a little depressed. वो कहती है ये बात मेरे ख्याल में तब आई कि पेपर आखिर इतना अच्छा फ्रेंड क्यों है मेरा, या क्यों बन सकता है. क्योंकि एक दिन मैं ऐसे ही डिप्रेस थी and I was sitting at home, मैं घर पे बैठी थी with my chin in my hands, मेरे हाथों में मेरा चिन था. I was bored and listless. That means I had nothing to do. Listless and bored. दोनों. She had no work to do. Wondering, I was thinking whether to stay in or go out. जब मैं ये सोच रही थी कि मैं घर में रहूं या मैं बाहर चली जाऊं. I finally stayed where I was. Of course, she did not go out. She was staying where she was. Brooding. Brooding का मतलब क्या होता है? Brood का मतलब होता है to think deeply. जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो उसको कहते हैं brooding. Is that okay? जिसको हम लोग ponder भी करना कहते हैं. To ponder, to brooding, to ponder, ये सब same है. She was brooding. Yes, yes. She said yes. Paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiffed back notebook, उसने कहा कि हाँ सच बात है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है. And because I'm not planning anyone else to read this, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी डायरी कोई और पढ़े. And she said for the diary, it is a stiff backed notebook, a very hard notebook. उसके जो कवर था ना डायरी का वो बहुत हार्ड था. उसको वो कह रही है कि I don't want or neither am I planning कि बाकी लोग भी मेरी नोटबुक पढ़े. Grandly referred to as diary, जिसको लोग डायरी का नाम देते हैं. Unless I should ever find a real friend. मैं अपनी डायरी तभी दूंगी किसी को पढ़ने के लिए जब मेरा कोई रियल फ्रेंड होगा. Probably it won't make a bit of a difference. And वो कहती तब हो सकता है ये चीजें इतनी डिफरेंस ना क्रिएट करें. And she is a 13-year-old girl. देखो उसकी लाइफ कैसी चल रही है. She is like in a half of a dilemma. मैं लिखूं, फिर वो खुद ही कह रही कि हाँ मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिल से मैं चीजें उतारना चाहती हूँ. Then her life was all bored, listless. She did not have any companion and she was thinking when she realized that paper has more patience than people. What happened next? Now I am back to the point. अब वो डायरी लिख रही है ना, तो वो आपसे कहती है that I am back to the point. That prompted me to keep a diary in the first place. Now she is giving you the reason. कि आखिर उसने first place में डायरी लिखना start ही क्यों किया? What prompted her? To prompt का मतलब क्या होता है? What incited her? किसने उसे incite किया? किसने उसे push किया to write a diary? I don't have a friend. उनका आंसर था I don't have a friend. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. She says I have no friend. फिर वो कहती let me complete this for you. That does not mean कि the world will think कि 13 साल की लड़की का तो कोई है ही नहीं. She is all alone in the world. And I am not. Because she is not. वो कहती है मेरा फ्रेंड नहीं है, कंपेनियन नहीं है उसके पास. I have a loving parents. I have loving parents and a 16-year-old sister. And there are about 30 people I can call friends. वो कहती है कि मेरे पास लगभग 30 लोग हैं जो सब के सब मेरे फ्रेंड्स हैं. I have a very loving family, very good parents. I have a family. I have loving aunts and a good home. तो ये मत सोचना कि मैं अनाथ हूँ, कि एक 13 साल की लड़की अनाथ है इसलिए वो लेटर लिख रही है या डायरी लिख रही है. No, I have a very good family. I have a very healthy family. Then what is the problem? Why does she say that there is no one, that I don't have a friend? No, on the surface, I seem to have everything except one true friend. उसने कहा on the surface I have everything. बस मेरे पास अगर कोई चीज नहीं है तो वो एक true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, या आप लोग भी सोचते होगे कि जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ I'll have a good time, I'll just go have fun with them, talk, eat. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. But फिर we are reduced to the same thing and we talk about
everyday things. आज मेरे घर में ये हुआ, मेरे घर में वो हुआ. We don't seem to be able to get any closer. And that's the problem. She says, the problem is I can't bring myself to talk about anything ordinary. We only talk about ordinary things, and that's the problem. Because I can't get closer to people. So who can I be closer to? A diary. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. वो खुद ही कह रही है कि हो सकता है ये मेरी भी गलती हो. वो खुद ही कह रही है कि हो सकता है ये मेरी भी गलती हो कि हम सब लोग, या जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, we cannot confide in each other or in one another. Now when I say she cannot confide in, एक second, she means कि वो disclose नहीं कर सकती अपनी बातें. She cannot reveal her secrets. She says it might be my fault. In any case, चाहे जो भी हो, that's how things are. वो कहती है जो भी है वो यही है. This is how things are. And unfortunately, they are not liable to change. और वो 13 साल की है ना, तो वो कहती है कि हो सकता है आगे भी जाके ये change ना हो. So I will need a friend, to talk to share my emotions, to share my feelings. This is why I have started the diary. So now she is answering the question of what prompted her to write a diary in the first place. What was the reason why she suddenly had this urge, the desire, the want to write a diary? Lack of friend with whom she can share all her whereabouts with. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, इसीलिए मैंने इस फ्रेंड को जो अब मेरे इमेजिनेशन में, जिसको मैं लंबे समय से वेट कर रही थी, जिसका I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. मैं अपनी डायरी को वैसे नहीं लिखना चाहती जैसे नॉर्मली लोग लिखते हैं. But I want the diary to be my friend. She says मैं अपनी डायरी में अपने फ्रेंड जैसी बात करूंगी. And I am going to call this friend Kitty. And here comes the name of the friend. It is Kitty. What is the name of this friend? It is Kitty. उसने अपनी डायरी का नाम लिखा है Kitty. This is a very important point in this paragraph. यहां से पैराग्राफ में आप उसके इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं. What happened? Since no one would understand a word of my stories to Kitty, क्योंकि कोई भी नहीं समझेगा कि किटी से मैं क्या बात कर रही हूं. If I were to plunge right in, अगर मैंने डायरेक्टली आज से लिखना शुरू कर दिया तो कोई नहीं समझेगा कि मैं किटी से किसके बारे में बात कर रही हूँ. सोचो वो 13 साल की उम्र में कितनी समझदार थी. हम लोग ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि हम क्या खाएं. वो कहती है कि क्योंकि कोई नहीं समझेगा कि मैंने किटी से क्या लिखा, तो बेहतर है मैं अपनी लाइफ स्केच दूं पहले. After all, who I am, where do I come from? She's so intelligent, you see. I would better provide a brief sketch of my life. She says कि पहले मैं आपको अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच देती हूँ. Much as I dislike doing so, वैसे तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है. My father is the most adorable father I have ever seen. She loves her father for sure. She says I have the most adorable father. Did not marry my mother until he was 36. जिसने उसकी मॉम से तब तक शादी नहीं करी जब तक वो 36 के नहीं हो गए और उनकी मॉम 25 की नहीं हो गई. She also has a sister, Margot, who was born in Frankfurt in Germany in 1926. उसकी सिस्टर जर्मनी में बॉर्न हुई थी 1926 में. I was born on 12th June 1929. मेरा जन्म 12 जून को हुआ था. I lived in Frankfurt until I was 4. जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही थी. My father emigrated to Holland in 1933. फिर मेरे पापा एमिग्रेट कर गए. एमिग्रेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने अपना जगह चेंज किया है. You have changed your place from one place to another. अब वो कहाँ आ गए हैं? अब वो आ गए हैं हॉलैंड में. My mother Edith, Hollander Frank. Now her mother Edith went with him. She also went with him to Holland in September. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. और मुझे और मार्गॉट को, मतलब हम बहनों को ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया इन आशेन. मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. फिर मार्गॉट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में. एंड आई फॉलोड इन फरवरी. और मैं फरवरी में वापस आई. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, जब मुझे मार्गॉट के बर्थडे पे
सरप्राइज दिलाया गया, मतलब आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, दैट मीन्स आई वॉज लाइक सेटल्ड डाउन, आप उसको सेटल किया गया उस दिन, मतलब उसको सरप्राइज करके, जब डिनर टेबल में मार्गॉट बैठी थी तो सरप्राइज किया कि लो तुम्हारी बहन भी आ गई. So she was flung down on the table. I started right away at the Montessori nursery school. फिर वहां मेरी nursery school में admission हुआ. I stayed there until I was 6. मैं 6 साल तक वहीं थी. Until I was 6, 2 साल तक. At which time I started in the first form. फिर मैं first class में गई. In the 6th form, when I was there in the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. और फिर मेरी टीचर थी वहां पे जो मेरी हेड मिस्ट्रेस भी थी, मिसेस क्यूपरस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एंड वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. मतलब एंड में हम दोनों ही रोने लगे क्योंकि हम लोग एक दूसरे को फेयरवेल कर रहे थे, हम एक दूसरे से अलग जा रहे थे. सी हर स्केचिंग ऑफ लाइफ इज सच अ ब्यूटिफुल वर्क. 13 साल की बच्ची के लिए कितनी बड़ी चीज है. इन द समर ऑफ 1941, फिर बोला गया कि in the summer my grandma fell ill. She suddenly became ill and had to have an operation. So my birthday passed away with a little celebration. इसलिए मेरे बर्थडे में थोड़ा ही celebration हुआ. Grandma died in January 1942. And then एक साल बाद grandma की death हो जाती है. No one knows how often I think of her and I still love her. No one knows कि मैं उनके बारे में आज भी सोचती हूँ. And I still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. 1942 में इसीलिए मेरा birthday celebration अच्छा हुआ. And grandma's candle was lit along with the rest. और सबके साथ grandma के भी नाम का candle जलाया गया. The 4 of us are still doing well. हम चारों आज भी अच्छे हैं. And that brings me to the present date of 28th June 1942. और वो मुझे लेके आता है आज के दिन में. And the solemn dedication of my diary, and where I will be solemnly dedicated from here onwards. With whom? To my diary. I will be a solemn dedication. यहाँ पे solemn क्यों बोला जा रहा है पता है आपको? क्योंकि solemn का मतलब होता है मैं बहुत ज्यादा sincerity दिखाऊंगी. अब मैं अपनी डायरी की तरफ बहुत sincere हो जाऊंगी, बहुत honest हो जाऊंगी. And that will be my dedication of my diary. Is that okay? So here is what you have read so far from this story. A beautiful story showing a girl putting out her entire life in front of readers just like that. Such simple language for a 13-year-old girl to write and even think about it, जो हम सोच भी नहीं सकते. But इसके बाद story unfold होगी जो कि part 2 में होगा और वहां से मैं आपको बताऊंगी कि फिर story में इसके बाद क्या होता है और इसके साथ question answers. I hope you have enjoyed today's session, guys. Thank you so much for listening to me. And guys, please like and share जरूर करके जाना और अपने emotions, आपके जो भी ideas हैं उनको express करना. Now, I had already promised you about a Telegram channel, but until and unless I take a session live, I cannot show you the link of the channel. So, my next live class will be on Monday and Tuesday. We will be connecting on a Monday with a link of a Telegram channel, which will already be created on Saturday. You people will just go join the channel so that you get all the updates about all my upcoming sessions. Will that be okay? I'm extremely sorry that this took another week to get this done because this is just like a matter of 10 minutes time. It will hardly take 10 minutes to create, but can't help because I'm not having regular live sessions. The only problem is that I'm having a bit of problem in communicating this with you people. Right, so I want everyone to be there so that you can just share notes. We can come on video conferencings and calls and we can talk to each other. We can share our ideas. We can talk to school students and we can just randomly sit and chit chat about what is going on in school, syllabuses, your doubts, and that will just make interaction easier. Right, so thank you so much, guys. Thank you so much for being a part of a lovely analysis. Stay blessed. Keep imbibing because imbibing is better than learning. Stay blessed. Keep imbibing. We believe in you.